Today we are going to start with thermodynamics again. We are actually retracing now. अभी हम लोग बैक जाएंगे, थर्मोडायनामिक्स के जो जेडब्ल्यू नीट के क्वेश्चंस हुए थे वो करेंगे एंड सेम विल बी फॉर केटीजी. So first question, and today I am starting with the questions that appeared in NEET exams. Around 20 questions आए हैं thermodynamics में अब तक के NEET exam में. So first, figure below shows two paths that may be taken by a gas to go from a state A to state C. So these are two paths. The gas can go to from A to C via ABC or directly AC. तो दो पाथ हमको दिए है, A, B, C या फिर डायरेक्टली A से C, एंड वैल्यूज भी दी है. क्या पूछा है दैट इज मिसिंग. सो दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, क्योंकि आप देख रहे हो इस डायग्राम में दैट वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. वॉल्यूम अपने आप तो इंक्रीज नहीं होगा, amount of heat has to be absorbed. So question is incomplete. They're asking you what is the amount of heat absorbed from A to C. Okay, so how do we find out amount of heat absorbed? Before that, what we should know is for a cyclic process, what we should know. For cyclic process, we have amount of heat absorbed is equal to work done. Amount of heat absorbed. How do you find out amount of heat absorbed? Okay, you can just calculate it from this particular diagram and you should know that is 400. 400 कहाँ से आया, you should know this. Okay, ये दिख रहा है आपको this values और ये दिख रहा है आपको वॉल्यूम. yes, तो you should know 400 कैसे आया because you are experts now. plus 100 ये आपका आया AB से, ये आपका आया BC से, प्लस so you should know what is the amount of heat absorbed from A to B, from B to C and also from C to A. वही तो फाइंड करना है. is equal to work done, and you know how do you find out work done? It is area under the curve. So work done is area under the curve. You should know this. तो ये 400 plus 100, okay, minus A to C, क्योंकि C to A डायरेक्शंस ग्राफ में डायरेक्शन दिया है A to C, हमने लिखा C to A क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस की बात की. A से B, B से C, C से A, A से B, B से C, C से A. दैट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, राइट. साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट से होना चाहिए. A to B, B to C, C to A, राइट. सो दैट्स व्हाई आई रोट हियर heat from A to B, heat from B to C, heat absorbed from C to A. So C to A heat absorbed is minus time of A to C. That is equal to work done, and work done is area under the curve, and area under the curve मतलब area of this triangle basically, that is half base into height, and height is this. Correct. तो height और base की values पता है. Okay, good. Then you will solve this. This is 500 minus ये दो गया, 400 into 10 power minus 4 and minus plus 4 and minus 3, that is 40, equal to amount of heat absorbed. So QAC is nothing but 460. So amount of heat absorbed from A to C is 460 joule. Right. Question easy था, आपको सिर्फ amount of heat absorbed निकालना था from A to C. Question is half printed. So if such questions come in exam, you get full marks for attempting, right? तो क्वेश्चन जितना प्रिंटेड है उससे जो अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने बोला है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम ए टू सी. दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड. व्हाट वी हैव डन इज फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, कौन सी साइक्लिक प्रोसेस? ए बी सी ए.
this cyclic process. Amount of heat absorbed from A to B plus B to C plus C to A is equal to total work done. Total work done is area of the triangle, right? Heat absorbed from A to B is 400. 400 कैसे होता है? You need to know. Okay, नहीं पता होगा तो दिया होगा that amount of heat absorbed from A to B is 400. If graph doesn't give you sufficient information, so this information will be provided to you. Okay, it will be provided to you and you have to solve this, right? Easy question. Next is of the same type. A sample of ideal monoatomic gas is taken round the cycle A B C A. देखो डायग्राम में एरोस उल्टे दिए हुए हैं, बी ए सी बी दिया हुआ है डायग्राम में हमको बोला है ए सी बी ए. लुक एट डायग्राम A to C, C to B, B to A, और क्वेश्चन में बोला है उल्टा A to B, B to C and C to A, right? The work done during this cycle is, so the arrows are pointing in the opposite direction with respect to what is asked in the question, correct? So you need to understand a very basic thing. Work done in this case is equal to negative of work done. So we are being asked work done from A, B, C, A. This will be negative of work done A, C, B, A. That is equal to, क्योंकि ये वर्क डन A, C, B, A हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये हम लोगों को डायग्राम से मिल सकता है. So that is nothing but area under PV curve. Okay, right? How do you find out area under PV curve? Is area of triangle minus half base. Base is AC into height. Height is CB. That is equal to minus half AC. AC मतलब C पॉइंट पे वैल्यू माइनस A पॉइंट पे वैल्यू. हाइट BC CB is B पॉइंट पे वैल्यू माइनस C पॉइंट पे वैल्यू. तो हाफ C पे वैल्यू आया आपका वॉल्यूम का 3V माइनस A पे है V. ओके, B पे आपका प्रेशर का वैल्यू है 4P और C पे है P. तो दैट इज इक्वल टू माइनस हाफ 2V इंटू 3P. कैंसल कैंसल, तो माइनस 3PV इज द आंसर. यहाँ पे प्लस दिया है, ठीक है, प्लस दिया है. सो दिस इज द आंसर. यू हैव ऑप्शन नंबर B, 3PV as the work done in cycle ABCA. तो सच इज द लेवल ऑफ क्वेश्चन. बहुत सिंपल है, 2013 में आया था ये क्वेश्चन. Next question again related to cyclic process. A system is taken from state A to state C by two path. ADC से एक बार गया and ABC से भी जा सकता है, right? The internal energy at A, तो A point पे internal energy जो है वो 10 जूल है. Along the path ADC, मतलब हम लोग इस पाथ की बात कर रहे हैं. Along the path ADC, the amount of heat absorbed is, so amount of heat absorbed delta Q ADC is nothing but delta Q1 बोला है उसको, that is 50 joule. And the work obtained is, and the work obtained during this process of ADC is 20 joule. Whereas along the path ABC, the heat absorbed is, so the heat absorbed along path ABC is equal to delta Q2 is equal to 36 joule. What is the amount of work done along path ABC? दो पाथ है, राइट? तो हमको दोनों पाथ के अलोंग हम लोगों को
अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब दिया है, अगर एडीसी से गए तो कितना हीट एब्जॉर्ब, एबीसी से गए तो कितना हीट एब्जॉर्ब, एडीसी से गए तो कितना वर्क डन होगा, कितना वर्क ऑब्टेन हुआ है, और अगर हम एबीसी से गए तो हाउ मच विल बी वर्क ऑब्टेन, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग यू. सो हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? व्हाट वी नो इज थर्मोडायनामिक्स का पहला लॉ, राइट, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, what we have is delta Q is equal to delta U plus delta W, right? Correct. So delta Q for the path ADC is equal to delta U for the path ADC plus delta W for the path ADC. तो डेल्टा Q हमको दिया है एडीसी पे 50 जूल 50 जूल, ये हमको फाइंड ही करना है, क्यों करना है समझेगा आगे जाके. और डेल्टा W एडीसी भी दिया है 20 जूल. तो देयरफॉर अमाउंट ऑफ internal energy, change in internal energy along ADC is 30 joule, right? Correct. Then why did we find this value? हमको ये value find करने की जरूरत क्या पड़ी? Okay, so let us see why we had to do this thing. ऐसा क्यों करना पड़ा हमको? Let's see. Just a minute. Yes. So we did it because अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एबीसी पाथ के अलोंग अगर मैं यूज करता हूं, एबीसी के अलोंग अगर मैं अप्लाई करता हूं, तो प्रॉब्लम होगा. क्यों? क्योंकि एक इक्वेशन और दो अननोन, वी डोंट नो दिस एंड वी डोंट नो दिस. वो तो फाइंड ही करना है, डेल्टा डब्ल्यू एबीसी तो फाइंड ही करना है. बट व्हाट वी नो इज अगर प्रोसेस साइक्लिक हो, सो इन अ साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस बोलने से तो मैं ऐसा बोलूंगा बिकॉज दिस इज नॉट अ साइक्लिक प्रोसेस, अगर एंड पॉइंट सेम हो और स्टार्ट पॉइंट सेम हो, इफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम, then change in internal energy along ADC is equal to change in internal energy along ABC, so that is 30 joule. तो हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी अलोंग एडीसी से इसलिए निकाला था बिकॉज हमको चेंज इन इंटरनल एनर्जी अबाउट एबीसी चाहिए, और अगर एंड पॉइंट्स सेम है, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज सेम. देयरफॉर व्हाट वी विल गेट इज डेल्टा क्यू एबीसी हमको पता है, डेल्टा क्यू एबीसी दिया ही है हम लोगों को, दैट इज 36 जूल्स. अभी ये डेल्टा यू एबीसी 30 जूल आएगा, एंड देन वर्क डन फाइंड करना है. Therefore, it is just 6 joule. By subtracting 36 minus 30 करने के बाद 6 जूल आएगा, तो आंसर इज गोइंग टू बी 6 जूल. तो ऑप्शन नंबर डी. Again, this question is from 2013. So you can see the level is not very difficult. The questions are not very difficult. They are easy questions, thermodynamics. Next. A sample of 0.1 gram of water at 100 degrees Celsius and normal pressure requires 54 calorie of heat to convert to steam at 100. मतलब latent heat की बात चल रही है, latent heat. ओके, आपको पता है कि वाटर का लिक्विड से वेपर 100 डिग्री पे होता है. तो पर्टिकुलरली 100 डिग्री पे जब आप हीट सप्लाई कर रहे हो, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है. You are supplying heat, but temperature is not increasing. Why? Because that heat supplied is basically changing the state phase of the substance. उसको वो liquid से vapor में convert करने में यूज होता है, उसको बोलते हैं latent heat of vaporization. Correct? If the volume of the steam produced
is 167.1 cubic centimeter. Cc मतलब cubic centimeter. The change in internal energy of the sample is. Question is very good, provided that you know all these concepts. So I'll go a little slow. What is change in heat here? Delta Q, the amount of heat supplied. हमको बोला ही है कितना heat supply किया 54 calories का. You have to convert 54 calories into joule, and you should know that 1 calorie is 4.18 joule. So 54 calorie is nothing but 225.72 joules. That is amount of heat supplied. Okay, then what is the work done here? Okay, you should know this particular formula. Work done मतलब P, क्योंकि हमको पता है pressure into volume है ना. Change work done is what? PV basically. So PV minus VW. What is VW? Volume of water. Okay, volume of water. And what is V? Volume of vapor. तो अगर आपको ये भी नहीं समझ में आता तो what you can say is P final V final minus P initial V initial. But P final and V final are same. So P V final minus P V initial. So you can write P V final minus V initial. तो फाइनली तो वेपर बना. प्रेशर की आपको दिया हुआ है नॉर्मल प्रेशर 1.013 इंटू 10 पावर 5. फाइनली क्या बना वेपर. वेपर का वॉल्यूम कितना है दिया है 167.1 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो 167.1 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो 10 पावर माइनस 6 बनता है. माइनस initial volume. How do you find initial volume? You should know. Density is mass per unit volume. Density is mass per unit volume. So volume is mass per unit density. है ना. करेक्ट. मास दिया है 0.1. डेंसिटी पता है वाटर का पता होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. वो सब्सटीट्यूट करने के बाद यू विल हैव 0.1 into 10 power minus 6. Because if you don't know, finally 1 gram turns out to be 1 cc, 1 cubic centimeter volume. करेक्ट. क्योंकि डेंसिटी की वैल्यू डालने के बाद ये सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है. राइट. तो यू हैव ऑब्टेन्ड व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू. सब सिंप्लीफाई करने के बाद यू विल गेट 16.917 जूल. सब करने के बाद बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन दिस कैलकुलेशंस फॉर यू, तो आई नो दिस. नाउ what we know is from first law of thermodynamics, delta Q is equal to delta U plus delta W. और हमको वही पूछा है the change in internal energy is how much. So change in internal energy is delta Q minus delta W. Delta Q is 225.72 minus delta W is 16.917, and that turns out to be 208.8 joules. मतलब क्वेश्चन वाज नथिंग. हमको सिर्फ इतना ही सॉल्व करना था. वी हैव टू जस्ट अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सिर्फ डेल्टा क्यू भी दिया है हमको उसको जूल्स में कन्वर्ट करना था. द प्रॉब्लम वाज टू फाइंड आउट डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन, बिकॉज हियर द वर्क इज डन नॉट टू एक्सपैंड. ठीक है. ठीक है, चलो बोल सकते हैं एक्सपैंड, बट ऑल्सो हियर द वर्क इज डन टू चेंज द फेस. करेक्ट. तो इसलिए हमने पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई किया है यहाँ पे, क्योंकि इनिशियली जो था वो वाटर था और बाद में उसका वेपर बना. तो फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया था. वर्क डन मिल गया. फिर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई किया. एंड व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी 208.8 जूल्स. राइट. So this is how this simple question was. Next, pressure temperature relationship for an ideal
gas undergoing adiabatic change is. वैसे तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं करके देना चाहिए क्योंकि ऑप्शन इज डी, बट हमको पता है एडियाबैटिक के लिए पीवी रेस टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। हमने बहुत बार किया है ये, बहुत बार किया है ये। अगर हम लोगों को पी और टी का रिलेशन चाहिए तो आई हैव टू गेट रिड ऑफ वी, मुझे वी हटाना पड़ेगा। तो हम लोग लिखते हैं पी वी इज इक्वल टू आर टी, फिर हम लोग बोलते हैं वी इज इक्वल टू आर टी बाई पी। फिर इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग equation number 2 and equation number 1, we have P and V is RT by P whole raised to gamma equal to constant. So it is P R raised to gamma T raised to gamma upon P raised to gamma equal to constant. P raised to gamma ऊपर जाएगा तो माइनस gamma होगा, T raised to gamma, और R is a constant, constant raised to anything is a constant, तो मैं इसलिए इसको constant by R raised to gamma कर देता हूँ। So this is P1 minus gamma T raised to gamma, constant upon constant is another constant. तो आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी। 2013 का क्वेश्चन है ये भी, 2013 में बहुत आया था मिनी क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स। एंड लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था दैट वाज 2018। तो दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, अगर आपको रिलेशंस याद होंगे तो इट इज क्वाइट सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट, during an adiabatic process the pressure of gas is found to be proportional to the cube of its absolute temperature. The thing is, during an adiabatic process pressure is found proportional to cube of its absolute temperature, then the ratio of Cp by Cv for a gas is. Can I write down this as P upon T raised to 3 is equal to some constant? Yes. Can we write this as P T raised to minus 3 is equal to constant? Yes. करेक्ट। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, अगर ऐसा समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो भी ठीक है, अगर अदरवाइज ओके। लेट्स नॉट डू दिस वे, आई हैव अ शॉर्टकट, सो लेट्स डू इट इन अ शॉर्टकट वे। ओके, सो दिस इज गिवन टू यू, ये आपको गिवन कंडीशन है। जस्ट अ मिनट। Okay, so why I don't want you to do this way is because just now आपने ये लिखा p raised to 1 minus gamma, p raised to 1 minus gamma, t raised to gamma is a constant. मतलब what you can say is p raised to 1 minus gamma is proportional to 1 upon t raised to gamma. मतलब what you could have noticed is this thing. मतलब what you could have done is take 1 minus gamma root on both sides, so this thing, correct? मतलब what we could have done is p is proportional to gamma upon gamma minus 1, of course t raised to gamma upon gamma minus 1, correct? easy thing, easy है, एक एक स्टेप मैंने इजीली बताया है आपको, but given but p is proportional to t cube, this is given. Equation 1 and equation 2, comparing 1 and 2. So if I compare equation number 1 and 2, what we get is gamma upon gamma minus 1 is equal to 3. Therefore, gamma is equal to thrice gamma minus 3. Therefore, what I have is twice gamma equal to 3. Therefore, gamma is equal to 3 by 2. And gamma is nothing but Cp by Cv, right? Therefore, gamma is equal to Cp by Cv is equal to 3 by 2. Option number A. And you should remember 3 by 2 gamma की value is for which type of gas? Ideal monoatomic,
डायटोमिक, रिजिड डायटोमिक, नॉन रिजिड डायटोमिक, ये याद होना चाहिए आपको, राइट। तो दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, 2013 में आया था और ये बहुत सिंपल है। सिर्फ आपको ये याद होना चाहिए हाउ पी एंड टी आर रिलेटेड फॉर एन adiabatic process. So that is all you were supposed to know to solve this question. Then question 7th, in the given volume temperature diagram, what is the relation between P1 and P2? Pressure, volume, temperature, these are the three parameters which are used to study gases. And we already know, what we know is, for an ideal gas, PV is equal to nRT, right? Correct. Which means if I am relating, अगर मुझे वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करना है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू NR by P into T. ऐसा क्यों? Because what you know from a graph is, अगर x एक्सिस और y एक्सिस है और if there is a straight line passing through origin, तो y is equal to mx, मतलब m is slope, right? M is slope, and that slope is equal to tan of the angle made by the line with respect to x axis. अगर ये आपको पता होता तो आप बोल सकते थे therefore इक्वेशन नंबर 1, या फिर मैं एक काम करता हूं, इसको बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1 and I will remove this from here. Okay, so I will call this as equation number 2 and I'll say from 1 and 2, what we notice is y is v, x is t, slope is equal to nr by p, correct? And slope is nothing but tan of theta, correct? So for P1, ये P1 line है, this is P1, this is P2. So what you can say from graph is, from graph, theta 2 is greater than theta 1, है ना? Angle theta 2, this angle theta 2 is greater than this angle theta 1, correct? Therefore tan of theta 2 is greater than tan of theta 1, correct? Simple, very simple. That means slope is greater than m2 is greater than m1, correct? But slope m is proportional to 1 by p, inversely proportional है. Therefore 1 by p2 is greater than 1 by p1. Therefore p1 is greater than p2, which means p2 is less than p1. Option number D. इतना मैंने करना नहीं चाहिए था, बट फॉर यू टू अंडरस्टैंड हमने क्या किया, PV इज इक्वल टू nRT यूज किया, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ है तो हमको मिल गया V इज इक्वल टू nRT बाई P, मतलब nR बाई P जो है इट इज स्लोप, क्योंकि ये लाइन जो है ये ओरिजिन से पास हो रही है, इसके लिए y इक्वल टू mx का फॉर्म लिखा है मैंने, तो y मतलब वॉल्यूम, x मतलब टेम्परेचर, स्लोप 1 अपॉन P से प्रोपोर्शनल है, स्लोप इज nr बाई P, दैट इज tan थीटा, क्योंकि थीटा 2 मतलब सेकेंड लाइन के लिए एंगल ये पहले लाइन से ज्यादा है, थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, मतलब tan थीटा 2 इज ग्रेटर देन tan थीटा 1, which means slope of second line is greater than slope of first, of course, but slope is inversely proportional to pressure, so 1 by P2 is greater than 1 by P1, so P2 is less than P1. Option number D. So this is how you're going to solve this question, again 2013. So you can see
हाउ इम्पोर्टेंट थर्मोडायनामिक्स was in 2013. 3 से 4 क्वेश्चन तो यहीं पे हो गए हमारे. नेक्स्ट क्वेश्चन, a gas is compressed isothermally to half its initial volume. The same gas is compressed separately through an adiabatic process until its volume is again reduced to half. Then मतलब we have to solve it in 2 cases. First case is isothermal, right? वैसे भी we have done this kind of type of question. पहले options पढ़ लो. Compressing the gas isothermally will require more work to be done. Compressing the gas through adiabatic will require more work to be done. Compressing the gas isothermally or adiabatically will require the same amount of work to be done. Which of the case requires more work will depend upon the atomicity of the gas. This is absolutely nonsense. उनका बोलना ऐसा है कि कौन सा गैस है उसके ऊपर, एटोमिसिटी मतलब कौन सा गैस है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, उस पर डिपेंड करता है. दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस. ऑप्शन नंबर डी कैन नॉट बी ट्रू. ऑप्शन नंबर सी कैन नॉट बी ट्रू, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन सेम नहीं होता. दिस इज ऑलरेडी व्हाट वी नो, राइट. तो ऑप्शन नंबर ए और बी, you need to remember some basics. Even if I don't split up it into cases, मैं अगर case 1 case 2 नहीं भी करता हूं तो you need to remember some basics. Okay, just a minute, एक मिनट दे दो. Right, yes, okay. So आपको बेसिक्स अगर पता होंगे तो, फॉर एग्जाम्पल, in isothermal process the amount of heat that we supply to a gas does what? Isothermal था. मतलब heat can be exchanged with the surrounding, right? The amount of heat that we supply does only work. There is no change in internal energy because the process is isothermal, same temperature process है. तो amount of heat supplied just performs work. एडियाबैटिक में डेल्टा क्यू ही 0 हो जाता है, बिकॉज नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम. तो एडियाबैटिक के केस में आपको मिलता है डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू. ये बेसिक्स है, राइट. अगर आपको ये भी नहीं याद है तो देयर इज वन मोर वे आउट. ओके, देयर इज वन मोर वे आउट ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, दैट इज ग्राफ. अगर इफ यू रिमेंबर हमने जब थ्योरी लिया था तो हम नॉर्मली प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, इसको एक नाम भी होता है, पीवी डायग्राम का नाम भी होता है. तो पीवी डायग्राम के थ्रू हम लोगों ने ये देखा था कि एडियाबैटिक प्रोसेस में द प्रोसेस इज समथिंग लाइक दिस. ओके, राइट. एंड आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ ऐसा आता है, मोर और लेस. So this is for adiabatic. This is for isothermal. What we notice is the process, whether it is adiabatic or isothermal, what we know is, हमको क्या पता है, work done in any case is area under the curve. And how do I solve this? मैंने ये डायग्राम कैसे ड्रॉ किया? रिमेंबर, एडियाबैटिक इज सडन प्रोसेस. सडन प्रोसेस मतलब उसका स्लोप ज्यादा होगा, ओके. और आइसोथर्मल इज नॉट अ सडन प्रोसेस, इट इज अ क्वासी स्टैटिक स्लो प्रोसेस, उसका स्लोप कम होगा. तो दैट इज व्हाई
विदाउट कॉन्सेप्ट, विदाउट थियोरी जेडब्ल्यू नीट के क्वेश्चन सॉल्व करना इज वेस्ट ऑफ योर टाइम, राइट? अगर सिर्फ इतना पता होता कि एडियाबैटिक is supposed to be a sudden process, slope of PV is more, isothermal is supposed to be quasi-static, slope is less, इतना पता होता तो वर्क डन इज एरिया अंडर द कर्व, मतलब वर्क डन फॉर एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन वर्क डन फॉर आइसोथर्मल, दिख ही रहा है क्योंकि एडियाबैटिक के लिए इतना एरिया, दिस मच ऑफ एरिया इज देयर, क्योंकि वो कर्व ऊपर की तरफ है, तो एरिया under the curve will be more, and area under the curve of PV diagram is nothing but work done. So work done in adiabatic is greater than isothermal. So compressing the gas through adiabatic process will require more work to be done. Option number B. So this is how you solve this question, right? Extremely simple question it was. Okay, then next question, 9th. 4 gram of a gas occupies 22.4 liter at NTP. The specific heat capacity of gas at constant volume is 5 joule per Kelvin. If the speed of sound in this gas at NTP is 952 meter per second, then the heat capacity at constant pressure is, I remember, मतलब CP पूछा है, I remember we solved this question, but I will repeat again, doesn't matter. What we know is velocity V is equal to under root of gamma RT by M, where M is mass. Okay, right, this is what you should remember, okay, ये velocity का formula है, ये पता होना चाहिए. Okay, good. If I square on both sides, तो v square equal to gamma RT by M, और ये तो हमने derive भी किया था, C is equal to under root of gamma RT by M. okay, हमारा इंटरेस्ट है टू फाइंड आउट gamma, क्योंकि gamma is CP by CV और हमको CP चाहिए, CV दिया है, तो gamma is v square M by RT, but gamma is CP by CV, that is v square M by RT. Therefore, CP will be equal to v square mCV by RT. This is equal to v square 952 का स्क्वायर, m 4 ग्राम है, उसको किलोग्राम में लिखना पड़ेगा, CV 5 है, अपॉन R की वैल्यू दी हुई है इन SI यूनिट्स 8.3, एंड T NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन का टेम्परेचर आएगा. तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एंड आफ्टर यू सॉल्व दिस you will end up getting 8 answer, 8 joule per K per mole. Okay, right, so this is also per mole I guess, correct. तो ये सॉल्व करना पड़ेगा and you will end up getting this answer roughly. Okay, good. So this is how you're going to solve this question, and again this is a very easy question, right? Okay, then next question. Thermodynamic process are indicated in the following diagram, और ये हमको ऑलरेडी पता है, ये हमने पहले भी सॉल्व किया है, बट स्टिल विल डू इट अगेन. हमको कॉलम को मैच करना है. प्रोसेस 1, you see what is process 1 here, this is process 1, no, not there, here you have this process 1. Process 1 is what? Process 1 मतलब it is parallel to y axis, ऐसा straight line है, parallel to y axis. Okay, मतलब basically if I plot P here and V here, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना पहले प्रोसेस के लिए,
वो उन्होंने y और x का बोला नहीं है, y पे प्रेशर है, x पे वॉल्यूम है, ठीक है, राइट, करेक्ट। तो पहला जो प्रोसेस है, इट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब आइसोकोरिक होता है, आइसोकोरिक होता है मतलब P शुड मैच विथ C, तो A और D तो नहीं हो सकता। दूसरा प्रोसेस नंबर 2, मतलब ये है प्रोसेस 2, दिस वन, ये तो आइसोथर्मल है ही, राइट, इज इट आइसोथर्मल प्रोसेस और नॉट, इज इट आइसोथर्मल और एडियाबैटिक? हाँ, दिस इज वेयर पीपल गो रॉन्ग, अच्छे से देखते नहीं है ना। ये जो लाइंस है ना, ये लाइन और ये लाइन, दीज आर लाइंस ऑफ आइसोथर्म्स, मतलब आइसोथर्मल मतलब सेम टेम्परेचर के लाइंस है, मतलब बेसिकली along this line, along this line temperature is constant, बट प्रोसेस नंबर 2 कैसा आ रहा है, प्रोसेस नंबर 2 यहां से आ रहा है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस है, मतलब Q शुड मैच विथ A, ऑप्शन नंबर बी, खत्म। अगर आपने आइसोथर्मल गलती से बोल दिया होता, ये जो लाइंस दी है ना आपको, ये इंटेंशनल लाइंस है, बिकॉज दिस इज 700 केल्विन लाइन, दिस इज 500 केल्विन लाइन, दिस इज 300, दिस आर आइसोथर्मल लाइंस, बट सेकंड प्रोसेस कैसा आ रहा है, सेकंड प्रोसेस यहां से ऐसा, टेम्परेचर सेम है क्या, नहीं है सेम, तो एडियाबैटिक हुआ वो, टेम्परेचर सेम नहीं है तो एडियाबैटिक हुआ वो, ओके। सो this was a very easy question, right? So that is sufficient for the day. We will stop here.